Right. So our topic is gamma function. Try to understand. Last time actually I have given definition, but again I am writing this because without definition you cannot understand this. So gamma function is given by definition. Gamma function of n is given by gamma n is equal to integration from 0 to infinity e raised to minus x and x raised to n minus 1 dx. So the variable which is on exponential function, that should be same here, and x, that power is n minus 1. So e raised to minus x, x raised to n minus 1. This n should be compulsorily greater than 0. That means the n should be positive number. There will no any negative number. Or you can write this formula as a in another variable also. जैसे कि gamma function of n is equal to 0 to infinity e raised to minus t. Generally, this is very important, useful, because the substitution will be always in terms of variable t. E raised to minus t, then t raised to n minus 1 dt. What is the relation between this gamma number and power of t? So how you are getting here gamma number n, power of t is n minus 1. If you add plus 1 here, you will get n number. That means if we have to write the gamma number, then in power of t, just add one number, then you will get that gamma number. So that is how to implement this formula. That is, for example, suppose we write the integration 0 to infinity e raised to minus t and t raised to 8 dt. So you can write this as 0 to infinity e raised to minus t and t raised to 8. 8 means 9 minus 1. So, and 9 minus 1 is like n minus 1. So in gamma function, what will be the number? Gamma function of n minus 1 है ना, तो gamma function of क्या है? n है. तो 9 minus 1, तो gamma function of 9. That means when the power of t is 8, see here relation. When power of t is 8, there is gamma function of 9. तो actually ये 9 कैसे मिला आपको? 8 plus 1 करके. Power of t is 8 and plus 1, you will get 9 in gamma number. Now, so you can directly write any other integration without any adjustment. For example, 0 to infinity e raised to minus x, variable can be changed, e raised to minus x and x raised to, suppose, 5 dx. So what will be gamma function? In that gamma x की पावर कितनी है? 5 है. तो 5 में क्या कर देंगे? सिर्फ आप प्लस 1 कर देंगे, तो यू विल गेट हियर 6. तो gamma नंबर में क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा. So that is simple. x की पावर हो, t की पावर, जो भी वेरिएबल है उसकी अगर पावर है उसमें सिर्फ आपको प्लस 1 करना है. बट फॉर्म शुड बी सेम. लिमिट ऑफ gamma फंक्शन इज ओनली फॉर 0 to infinity, not any other. Remember, limit of gamma integration is always from 0 to infinity. Exponential term is compulsory here. So suppose if there is a term e raised to minus t and t raised to 5 by 2 है, rational number है, but it is positive, then you have to write suppose gamma function. So t power is 5 by 2.
So in that 5 by 2, just add plus one number. So there is LCM 2, that is 5 plus 1 into 2 is 2, that is equal to 7 by 2. So gamma 7 by 2. Okay? All of you understood this gamma definition? In gamma function of n should be greater than 0. Gamma में number जो भी आएगा वो कैसा होना चाहिए? Positive. E raised to term is compulsory. Exponential function is compulsory. Okay. Now suppose जरूरी नहीं कि e raised to t रहेगा या e raised to minus x ही रहेगा. Suppose I am writing this 0 to infinity. E raised to suppose minus z है and z पर power है. Z raised to है suppose 8 like this. 8 हो गया ना. Z raised to कितना है suppose 4. कोई भी number है 4 है. dz, that means we change the variable but the pattern is same. Limit is 0 to infinity. Exponential term is present. Z जो है e पर वो इस साइड में है, उस पे पावर है, तो you can write gamma function. क्या आएगा? 5 gamma function of 5. बस. तो variable may be changed but the pattern should be same. Limit is 0 to infinity. Exponential function और साइड में e पर जो वेरिएबल है वही होगा कंपलसरी. बस जो भी पावर है उसमें +1 कर दो, गैमा नंबर मिल जाएगा. Okay, this is about definition. Next important is properties of gamma function, and these are very useful for objective type of questions. Definition also. Properties of gamma function. मैम ते मार्क्स से एग्जांपल दाखवा. Okay, ma'am. Properties of gamma function. There are some standard formulas. First is gamma 1 is equal to 1. So there is no need of proof. You have to just remember. Second is gamma 1/2 is equal to root pi. Now its proof is in Nirali book. You can see. बट प्रूफ नहीं आता है तो हमको सिर्फ जस्ट याद रखना है कि gamma 1/2 is root pi. Third is gamma n plus 1 is equal to n gamma n. This in gamma function, if there is any number, reduce that number by n. n कैसे मिला आपको? n plus 1 में से एक कम कर लिया तो n मिल गया. Suppose we have gamma function of 5. So gamma 5 कैसे लिखेंगे आप? 5 में से एक कम कर देंगे. 5 minus 1 is 4. 4 gamma 4. 4 as it is. फिर gamma 4 को आपको सॉल्व करना है. एक 4 में से कम कर दो. 3 gamma 3. 4 3. तो फिर gamma 3 सॉल्व करना है हमें. तो 2 gamma 2 reduce by 1 only. 4 3 2. 2 में से एक कम कर दो. 1 gamma 1. Gamma 1 is 1. So that is 4 into 3 into 2 into 1. What is this? 4 factorial. 4 factorial. So instead of solving this all steps, you can use this formula directly. कि gamma 4th formula इस पर से ही हम तैयार कर सकते हैं. Gamma n plus 1 is equal to how many factorials? Can you see from this? Right. Reduce one number and give factorial sign. Bas. So gamma n plus 1 is equal to n factorial. This is very important formula. So how you will imply this directly? तो इतना सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. Suppose you have integer in gamma function. तो gamma है suppose 4. So you will directly write down how many factorials? 3 factorial. 3 factorial. Gamma 10. That is 9 factorial.
बस एक नंबर कम कर दो, फैक्टोरियल आ जाएगा. बट दिस इज नॉट फॉर रैशनल नंबर. But for rational number, suppose there is a rational number 5/2. So don't write factorial because it is rational number. So for this gamma 5/2, like these numbers, rational numbers, use compulsorily this gamma n plus 1 is equal to n gamma n. So gamma 5/2 means 5/2 minus 1, मतलब एक एक नंबर कम करके लिखना है. 5/2 minus 1 and same number in gamma 5/2 minus 1. So 5/2 minus 1, that means LCM is 2. So 5 minus 2, that is equal to 3/2. So this is actually 3/2 and gamma 3/2. तो ये हमने ये अप्लाई किया अभी, तो इसके लिए फैक्टोरियल नहीं आएगा. तो 3/2 as it is, and for 3/2 again, gamma 3/2 again, use the same formula. 3/2 में से एक कम कर दिया, 3/2 minus 1 डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, बट स्टार्टिंग है इसलिए थोड़ा डिटेल में करें. 3/2 minus 1, तो 3/2 minus 1 LCM is 2, तो 3 minus 2 that is equal to half. तो 3/2 into half into gamma function of half. Okay, when there is number 1/2 in gamma function, तो 1/2 सॉल्व करने के लिए अगर आप ट्राई करेंगे तो 1/2 minus 1 करके देखते हैं तो क्या आता है. 2 is LCM, तो 1 minus 2 that is minus half. -1/2. हाँ, but if you are getting negative sign, then don't solve gamma function. Remember, क्योंकि अगर आप -1/2 लिखेंगे, -1/2 minus 1 अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3/2. फिर -3/2 minus 1 करेंगे तो -5/2. That numbers will not end. तो gamma में निगेटिव नहीं आना चाहिए. तो if it is negative, then stop. 1/2 आते ही स्टॉप कर देंगे आप लोग. एंड 1/2 में मतलब जो है पाई लिख देंगे. रूट पाई, पाई नहीं रूट पाई. ये रूट है, अंडर रूट अलग है, गैमा अलग, तो दैट इज 3/4 रूट पाई, ऐसे आ जाएगा. ओके, नाउ रैशनल नंबर के लिए n gamma n यूज करेंगे और फैक्टोरियल फॉर्मूला फॉर इंटीजर ओनली. ठीक है, नेक्स्ट इज सपोज यू हैव अ बिग नंबर. जैसे कि अब इतने स्टेप्स आपने किए, तो उसमें आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है. सपोज यू हैव अ 9/2 नंबर गामा में, तो आप क्या करेंगे, एक एक कम करके डायरेक्टली स्टार्ट करो. 9/2 minus 1 कितना होता है, 9 minus 2 upon 2, 7/2. तो स्टार्ट फ्रॉम 7/2, मतलब एक नंबर कम करके स्टार्ट करो, फिर कंटिन्यूसली एक एक रेड्यूस करो. 7/2 minus 1 is 5/2. 5/2 minus 1 is 5 में से 2 गया, 3/2. 3/2. 3/2 minus 1 is 1/2. 1/2. 1/2 माइनस नहीं करना √5. है. हाँ, 1/2 माइनस नहीं करना है, तो इंटू गामा हाफ या फिर रूट पाई, बस ऐसे ही 1/2 तक आना है सिर्फ आपको. ठीक है, मतलब लास्ट में गामा 1/2 यू विल राइट दिस रूट पाई. इस तरह से अगर नंबर है ग्रेटर तो आप एक एक रिड्यूस करो, निगेटिव आने के बाद स्टॉप कर देना है. दिस इज प्रॉपर्टी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो फॉर्मूला है डायरेक्टली. लेट ज्वाइन होने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये बेसिक अगर आपको नहीं पता है तो फिर आगे शायद बहुत डिफिकल्ट लगेगा फिर, क्योंकि रिपीट करने के लिए टाइम नहीं बार बार. नेक्स्ट फॉर्मूला 4 हो गया ना, 5. Fifth is a formula directly
फॉर्मूला मतलब उसका प्रूफ ऑलरेडी है, बट ऑब्जेक्टिव में प्रूफ नहीं आएगा. 0 to infinity e raised to minus kt t raised to n minus 1 dt is equal to gamma n upon k raised to n. This is a one formula. We can implement this formula. For which type of terms? Integration, like suppose our integral is 0 to infinity e raised to minus 4t and t raised to 5u dt, like this. So remember, in a gamma function the definition क्या होती है, देखो इसमें डिफरेंस क्या है. आपको लगेगा gamma function जैसा ही है, बट gamma function में क्या होता है, gamma n is integration from 0 to infinity e raised to minus t only. t पर कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है, t के साइड में, तो e raised to क्या होता है, सिर्फ माइनस t होता है. बट इन दिस फॉर्मूला देयर इज kt, तो k नंबर मीन्स यहाँ पर 4 है, तो t से मल्टीप्लाई 1 से ग्रेटर नंबर, t से अगर मल्टीप्लाई कोई कांस्टेंट आता है तो ये वाला k वाला फॉर्मूला यूज करो. तो हाउ यू विल कंपेयर दिस, k इज इक्वल टू 4. दिस इज गैमा फंक्शन डेफिनेशन, बट गैमा और इसमें डिफरेंस क्या है कि t से मल्टीप्लाई नंबर है, तो k इज इक्वल टू 4 and n is this n minus 1 term is n minus 1 is 5u. So k is equal to 4. So n minus 1 power is equal to 5 power. So n is equal to 6 हो गया. Just put this value here. Gamma n is gamma 6 upon k raised to n. k कितना है 4. 4 raised to n, that is 6. So gamma 6 कैसे लिखेंगे? Gamma 6 is equal to how many? Use this factorial formula. 5 factorial. 5 factorial. 5 factorial. एक reduce करके factorial. 4 raised to 6 जो भी आएगा, ठीक है. So this is one of the property या फिर formula. Just remember this formula. Next. Okay. इसमें किसी को अगर कोई डिफिकल्टी है तो देख, बट फॉर्मूला ही है. नेक्स्ट इज गामा पी गामा 1 माइनस पी, वो बाद में करेंगे. नेक्स्ट, हाउ टू सॉल्व द एग्जांपल्स एक्चुअली. तो दिस इज अ टाइप 1. इन विच टाइप 1 examples are containing the limits 0 to infinity. So first example is evaluate zero to infinity e raised to root y e raised to minus root y dy. So variable can be y, x, t, कुछ भी आ सकता है, बट द फॉर्म गैमा फंक्शन का ही होना चाहिए. नाउ सी हियर, इंटीग्रल इज लिमिट फ्रॉम 0 to infinity. First we will write exponential function, that is e raised to minus of root y, and into this root y side में है, and dy. This is equation number 1, suppose. We have to solve this integral. Now see, always substitution ऐसे करना है आपको, substitution कि we should get gamma function. तो what is a gamma function? तो 0 to infinity e raised to minus t raised to n minus 1 dt is equal to gamma n. जनरली यूज अ फिक्स डेफिनेशन जो टी में है, मतलब आपको इजी रहेगा. e raised to minus t and e raised to minus y. If we compare this both exponential terms,
e raised to e raised to. So think that सब्स्टिट्यूशन ऐसी होनी चाहिए कि आपको मिलना चाहिए e raised to minus t. तो इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूशन ऐसी होनी चाहिए कि आपको मिलना चाहिए e raised to minus t. तो e raised to minus ऑलरेडी है, तो रूट y के जगह पे क्या चाहिए, क्या चाहिए? इसके ऊपर 1/2. नहीं 1/2. नहीं नहीं नहीं, टी मिलना चाहिए हमें, हमें ये नंबर मिलना चाहिए e raised to minus t. तो रूट y सब्स्टिट्यूशन क्या आ जाएगी, रूट y इज इक्वल टू टी. Equal हाँ, t. तो t ऐसे सब्स्टिट्यूशन करना है कि e raised to minus t हमें मिलना चाहिए, बस उसके बाद सब अपने आप आ जाता है. रूट y इज इक्वल टू टी, बट सब्स्टिट्यूशन के बाद dy भी चाहिए हमें, तो क्या करेंगे फिर, स्क्वायरिंग. y equal to t square. स्क्वायरिंग पहले, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर. उसके बाद करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, विद रिस्पेक्टिव वगैरह नहीं, सेपरेटली, दोनों साइड में अलग अलग. डिफरेंशिएट बोथ साइड, डेरिवेटिव ऑफ y dy is equal to derivative of t square 2t dt. So at the place of dy you will put this total 2t dt. y की जगह पे रख देंगे आप t square और रूट y की जगह पे रख देंगे आप t. That is a substitution. When you will substitute any term, then क्या होता है फिर, लिमिट भी चेंज होता है ना. तो व्हाट इज लिमिट्स, तो लिमिट चेंज होता है कि नहीं देख लेना है सिर्फ. तो लिमिट्स और सब्स्टिट्यूशन इज t is equal to root y because t is our new limit. t is equal to है root y. और जो इक्वेशन नंबर 1 के लिमिट्स है वो किसकी लिमिट्स है, y के लिमिट है, बिकॉज इंटीग्रेशन इज विद रिस्पेक्ट टू y. तो y is equal to 0, lower limit. If you will put in this, what you will get, t root 0 is 0. Y is equal to infinity. T is equal to, put in substitution, t is equal to root infinity. Root infinity is also infinity. Means in this topic, in this type, there is no change in limits. So these are same limits. Okay, so you can put all these substitution in this equation number 1. So put substitution in equation number 1. नोटबुक पर करते जाना है कंटिन्यूसली. Put substitution in 1. So this 1 becomes, integral becomes, so limit does not change, therefore it is from 0 to infinity. E raised to minus root y, but root y is t. So therefore substitution becomes e raised to minus t. Then side में क्या है, root y. तो root y क्या है, t है. So that is t. dy. So dy is 2t dt. Okay, there should not be any variable y. All is in t after substitution. Now take constant term always outside. Then limits 0 to infinity. Take exponential term first, e raised to minus t. And there are t terms. How many t's are there? This one t and this t. It becomes t square. So in integration, this is e raised to minus t and t square dt. This is the form of gamma function. So now apply the definition of gamma function. So what is gamma function definition? So integration from क्या हो रहा है, कहाँ चला गया?
एक नेट प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है. Gamma n definition is, can you say this now? 0 to infinity e raised to minus t. Hello. Yes, ma'am. नीट डिस्प्ले हो रहा है मैडम. नेट, ये नेट का प्रॉब्लम है. e raised to minus t raised to n minus 1 dt is gamma function of n. तो सी कंपेयर दिस एक्सपोनेंशियल टर्म्स. तो देखिए e रेस टू माइनस टी हमें गामा में चाहिए होता है, तो ये यहाँ पर आ गया. और t की पावर t स्क्वायर है, तो ये t स्क्वायर है, और इधर क्या है, t रेस टू n माइनस 1 डेफिनेशन में है. तो यू कैन कंपेयर n माइनस 1, t की पावर है n माइनस 1, और लेफ्ट हैंड साइड में t की पावर है 2. तो n इज इक्वल टू कितना, 3. तो गामा n, व्हाट इज आंसर, 2 इंटू गामा कितना, टी स्क्वायर है ना, तो गामा कितना 3, तो दैट इज 2. गामा 3 कैसे लिखेंगे, गामा n प्लस 4 फैक्टोरियल. त्याचा नंबर से मतलब है कि 4 फैक्टोरियल की 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल. 2 फैक्टोरियल, एक नंबर कम करके फैक्टोरियल. बट 2 फैक्टोरियल इज 2 into 1, that is 2 only. So 2 factorial is only 2, that is answer is 4. So we can solve this type of integrations which has limit 0 to infinity compulsory and exponential terms containing. तो gamma से हम लोग उस टाइप के इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट. ये इसमें किसी को कोई है डिफिकल्टी? No, ma'am. Next, evaluate. Integration from 0 to infinity. Fourth root of x, fourth अंदर, मतलब ये अंदर है, fourth root of x e raised to minus of root x dx. Limit is 0 to infinity and integral is our 0 to infinity. E raised to minus root x, take this first term, e raised to minus root x, and this fourth root of x means what is x raised to 1 by 4. 1 by 4, right? This is dx. So it is actually power is 1 by 4, x raised to 1 by 4 कर लो, और dx, but root x को x raised to half करने की जरूरत नहीं है. This is equation number 1. So again see the same substitution. Same substitution because e raised to हमें मिलना चाहिए. तो definition of gamma function, तो 0 to infinity e raised to minus t हमें मिलना चाहिए, t raised to n minus 1 dt. This is a gamma function of n. So compare these exponential terms. The first exponential term is here e raised to minus root x, and here is e raised to minus t. What will be substitution? Again, root x is equal to t. तो ये तो लास्ट टाइम हमने किया है सब. x is equal to t square. Differentiate dx is equal to t dt. Limit does not change. आपको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, x is equal to 0. The substitution is t is equal to root x. So when x is equal to 0, t is also 0, and x is equal to infinity, t is also infinity. No change in limit in first type. Then put all this substitution in equation number 1. Integral becomes no change in limit.
e raised to minus root x. So it becomes e raised to minus t. What is x? X is equal to है t square. तो x की जगह पे t square रख दो. T square and its power is 1/4. And dx is 2t dt. लास्ट टाइम जो सब्स्टिट्यूशन था वही था, इसलिए मैंने फिर डायरेक्टली लिख दिया 2x dx. सॉरी मैम 2t चाहिए ना मैम. हाँ X 2t dt. 2t dt. Then just simplify. Take constant term outside always. Constant term outside and then simplify the terms of t. So integral is 2 is outside, 0 to infinity. E raised to minus t is only one term. So as it is, t square and is raised to 1/4. Total कितना? T raised T to raised to 1/2. 1/2. 1/2. And ये t एक और है 2t. dt. फिर जो t जितने हैं उनकी पावर्स को ऐड करो, ये दोनों t. 3/2. T raised to 3/2. That is 2 into 0 to infinity. E raised to minus t. T raised to half into t. That is t raised to half plus 1. T raised to 3/2. जिनको नहीं समझ में आता उनके लिए t raised to 3/2 dt. बस इंटीग्रल 0 to infinity e raised to minus t t की पावर. Then we have to write gamma function. Anybody solve this? 3 root pi by 2. Right. 5/2. 3/2 नंबर है तो उसमें आप 3/2 में +1 कर दो. You will get 5/2 in gamma function. So this is 5/2. Gamma 5/2. Definition लिखने की जरूरत नहीं है. अगर एक बार समझ में आ गया कि इस तरह से लिखते हैं, 5/2 को सॉल्व करो. 5/2 minus 1, 3/2. 2 into 3/2 factorial. 3/2 3/2 फैक्टोरियल मत लिखो. into 3/2 minus 1/2. 1, 1/2. 1/2 आ गया कि gamma half. root pi. Gamma half is root pi. एक 2 कैंसिल कर दो. ये वाला 2 एक सपोज 3/2 root pi. ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया. So this is 3/2. Gamma half is root pi. Okay, this is 3/2 root pi. This is about first type. So you can solve this integration 0 to infinity root x